राजनीतिक न्याय मांग रही है। और हमारा वायदा है श्री राहुल गांधी जी का कि इन महिलाओं को हम सशक्त करेंगे और राजनीति के दरवाजे, संगठन के दरवाजे अपनी उन बहनों के लिए खोलेंगे जो हिंदुस्तान की राजनीति में आकर कुछ कर दिखाना चाहती है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ KPCCಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Deputy CM KPCC President D.K. Shivkumar, along with other senior Congress leaders, attended the oath-taking ceremony of Soumya Reddy as the new president of the Karnataka Mahila Congress at the Bharat Jodo Bhavan in the KPCC office. The event took place on Thursday at the Bharat Jodo Bhavan in the KPCC office in Bangalore. Soumya Reddy took the oath of office with former President Pushpa Amarnath handing over the party flag. The ceremony was attended by National Mahila Congress President Alka Lamba and other ministers like Krishna Bairegowda and Lakshmi Hebbalkar, along with other party officials.